Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the reactions of halogens with metals. Yesterday we finished the reactions of haloalkanes with a metal. But today we discuss here the how the haloalkanes is react with a metal. Clear? Haloalkane means any compound which contain halogen as well as what here alkane called as the haloalkane, or any compound in which the halogen is attached to alkane called as the haloalkanes, or any compound in which the halogen attached to the any ring of or benzene ring called as the haloarenes. So today we discuss the reactions of haloarenes with a metal. Yesterday we finished the reactions of haloalkanes with metal, but today we started here the reactions of haloarenes with metal. Clear? In the first reaction, a Wurtz-Fittig reaction. The name of scientist called Wurtz. He give a reaction. This reaction name called as Wurtz-Fittig reactions. In this reaction, which reaction are used to prototype form and which reaction statement is we discuss here. This question asked in examination 2 marks or 1 mark. Define the Wurtz-Fittig reactions. Clear? This reaction is similar to the Wurtz reaction in the reactions of haloalkane with metal, but one difference is that the reactant are used in the haloalkanes is what here the only alkyl halides and sodium metal, while as in the haloarenes or Wurtz-Fittig reaction in which the aryl halide as well as alkyl halide and sodium metal are used. So explain the Wurtz-Fittig reaction or write down the statement of Wurtz-Fittig reaction. ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको डिफाइन क्या करना पड़ेगा हमको. The reaction with the aryl halide, this base is called aryl and the Br is come from the halide group halogen, or it is called as the bromobenzene. So when the aryl bromide is react with methyl bromide and sodium metal in presence of dry ether, the reaction in which to form the aromatic substituted group called as the methyl benzene, or special name is called as the toluene. Okay, so in this reaction we get what here the toluenes. What we get here toluenes means it is also called the common name methyl benzene. Clear? So what is reaction? In this reaction this Br are removed and this 2Na will be given 2NaBr, and the CH3 is attached to on the upper side of the benzene ring called as the toluene or methyl benzene. This reaction is called a Wurtz-Fittig reaction. Or reactions of haloarenes with metal. Which metal? Sodium metal. In this reaction, the sodium metal is act as an active metal or reactive metal to react a aryl halide to form the toluene or methyl benzene. Clear? Now we take the second reaction in the same reaction of haloarenes with metal. अब second reaction में देखते हैं हम लोग क्या होता है. तो in the second reaction the name is called as Fittig reaction only, not a Wurtz. It's only Fittig reaction. Is the Wurtz-Fittig means two scientists there. First, second. Two scientists called Wurtz-Fittig. Here only the scientist called as Fittig reaction. It means in this reaction only the aryl halide and sodium metal are used. Does not use the alkyl halide or any methyl bromide. So that's why it is called only the Fittig reaction. ये दोनों में change है बेटा. methyl bromide अगर यूज हो रहा है यानी इसको बोलते हैं alkyl halide अगर यूज हो रहा है तो रिएक्शंस का नाम है Wurtz-Fittig रिएक्शन और Wurtz रिएक्शन. और अगर मिथिल हालाइड और ब्रोमाइड और अल्किल हालाइड यूज नहीं हो रहा है, ओनली अryl हालाइड यूज हो रहा है, तो उसे बोलेंगे कौन सी रिएक्शन? Fittig reaction. What is Fittig reaction? So when a chlorobenzene or aryl halide is react with only sodium metal, here does not use the alkyl halide or methyl bromide as compared to these two. So only the aryl halide or chlorobenzene is react with sodium metal. In presence of dry ether, we get biphenyl product. When two benzene are joined together, this called as the biphenyl group. We take this is also called as the resonance structure or delocalization of pi electron. You know, in a benzene how many pi bond? 3 pi bond. It means how many pi electron?
6 pi electron will be delocalized. This is also called as the pi bond. Or this circle indicate delocalization of which bond? Pi bond. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये सिंपल फॉर्म में, इसको बॉन्ड के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में. क्लियर? इट्स आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस वे. बोथ आर सेम. Clear? Okay, so it is called what here? It is called as the aryl halide of chlorobenzene. So the aryl halide is react with sodium metal to form biphenyl. What is biphenyl? Means two benzene are joined to each other directly, called as biphenyl. Plus loss of 2 NaCl. This 2 Na and this 2 Cl. Why? Because we take 2 chlorobenzene, so we get 2 NaCl. It is called as what here? Fatigue reaction. Simple. Clear? Now question, what is resonance or what is resonance structures? ये question simple है समझने. Resonance means what here? It means the delocalization of pi bond or pi electron or lone pair. Delocalization of pi bond, pi electron or lone pair in any compound called as the resonance. And after the delocalization of pi electron or lone pair which conjugated to each other to form the which structure? Resonance structure. Clear? What is resonance? It means simple delocalization of pi electron called as the resonance. And this pi electron will be delocalized. It may be in the aliphatic compound, it may be in the aromatic compound. But we discuss here the what here? Aromatic compound. It means in a simple language, in a benzene, it contains 6 electrons which are delocalization is called as a resonance structure. We get resonance structure, maybe it have the plus charge or minus charge, depend upon the electron will be delocalized. अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं, मूव करना मतलब क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कर बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करेंगे तो चार्ज प्लस कहाँ पे आता है, माइनस कहाँ पे, उस पर डिपेंड करेगा. अगर एरो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल ऐसे इलेक्ट्रॉन तो है, अगर इसको हम इधर से मूव कर रहे हैं तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव. और जहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव. क्लियर है? दिस इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन आर गो फ्रॉम दिस साइड, सो इट गेट विद चार्ज प्लस चार्ज, एंड जहां पर जा रहा है उस पे चार्ज क्या आएगा बेटा? माइनस का आएगा. दिस इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. इस प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. दिस नेगेटिव चार्ज एटम इंडिकेट द न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज इलेक्ट्रॉन रिच. क्लियर? ओके. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट. B point we take the reaction of haloaries with metal. First we take the Wurtz fatigue reaction, or first we take the reactions of haloaries with metal. पहला पॉइंट लिया हमने इसमें. अब सेकंड पॉइंट देखिए बेटा हम लोग, nucleophilic substitution reaction of haloaries. It means in the haloaries how the nucleophilic substitution reaction are take place. haloaries में nucleophilic यानी SN बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SN कॉल्ड एज nucleophilic substitution reactions कैसी होती है उसको हम लोग देखेंगे. क्लियर है? Now first of all, question is there in the aryl halide the low reactivity toward the SN reaction. यानी जो aryl halide है बेटा, ये haloaries बोलते हैं हम लोग उसको, तो उसमें जो SN reaction है उसकी जो reactivity लो होती है. और क्यों लो होती है? The low reactivity of alkyl halide due to, किस वजह से उसकी reactivity कम है? किसकी? aryl और haloalkanes की, अरीज और हेलो अरीन्स की में एसएन रिएक्शन में. तो उसकी दो फैक्टर है. इज ड्यू टू नंबर फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट. विच इफेक्ट? फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट. सेकंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन. यानी जो कार्बन है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में, वो कार्बन का नेचर हमेशा कैसा होता है? sp2 होता है. वाई sp2? वाई कार्बन शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन? Because this contain a carbon, any compound which contain a carbon double bond, this each carbon are act as sp2 hybridization. These two factors, first called as the resonance effect and second is called as sp2 hybridized state of carbon. These two factors are very important to reactivity of haloarenes or what here aryl halide in SN reaction. So due to the less reactivity of haloarenes in SN reaction is what? First factor resonance effect and second is called sp2 hybridized state of carbon. Now question next, उसी में ऐड करना है हमको. Write down the resonance structure of chlorobenzene. How to write the
resonance structure of chlorobenzene. What is resonance? Means delocalization of what here pi electron or lone pair of any atom called as the resonance. So we take the question resonance structure of chlorobenzene. So in the chlorobenzene, it means Cl attached to benzene called as chlorobenzene. So in the chlorobenzene, here it is called as chlorobenzene. Chlorobenzene contains Cl. Cl is the electronegative atom and which has 3 lone pair. How many lone pair? 3 lone pair on the Cl atom. Clear? These 3 lone pair are conjugated with a what here? These each lone pair will be conjugated with a what? Pi electron in the benzene ring. What is conjugation? Means alternate single and double bond in between the carbon pi electron and Cl lone pair called as conjugation. यानी दोनों में क्या होगा? लोन पेयर जो Cl पर है और जो कार्बन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है दोनों में क्या होगा? कंजुगेशन होगा, जिसकी वजह से वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है या जो बॉन्ड है वो अल्टरनेट होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन प्लस चार्ज माइनस, इस तरीके से वो डीलोकलाइज होगा कॉल्ड एज रेजोनेंस. तो देखो यहाँ पर बेटा ये Cl पे 3 लोन पेयर है, तो ये एक लोन पेयर कहाँ पर डिस्कस देगा? इन बिटवीन द कार्बन एंड Cl. So this contain already single bond. So this pi electron is attached to the single bond converted to what here? Double bond. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? लोन पेयर कम हुई तो प्लस चार्ज आ गया. सेम हियर जो पाई इलेक्ट्रॉन है इन जो अंदर गया उसको बाहर ऐड किया हमने तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? प्लस का आ गया. ठीक है, यानी जो क्या किया हमने यहाँ पे लोन पेयर को चेंज करने किया, बॉन्ड पेयर में किया, और ये जो बॉन्ड पेयर थी उसको चेंज करने में किया हमने निगेटिव पार्ट में. ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ये मिला हमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर. सेकंड यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर चार्ज है निगेटिव चार्ज दोबारा उसको में चेंज किया हमने बॉन्ड पेयर में, दिखाई दे रहा आपको, और यहाँ से जो बॉन्ड पेयर चेंज करने किया उसको हमने यहाँ पर निगेटिव पार्ट में. तो जहां से भी वो एटम, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को चेंज कर रहे हैं हम लोग बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर को चेंज करने कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर लोन पेयर में, या फिर बॉन्ड पेयर चेंज करने कर रहे हैं हम लोग नेगेटिव पार्ट में. ठीक है, सेम स्टेप थर्ड है, दिस नेगेटिव पार्ट विल बी चेंज इनटू यार बॉन्ड, दिस बॉन्ड, एंड दिस फर्दर दिस bond pair in between inside the benzene, it will change into what? A negative part. Same way, this negative part will be changed into what here? Bond pair. We get this structure, okay, and this bond in between the double bond between the carbon and Cl will get into what here? Lone pair. That's why we get a structure of first and fourth. Okay. Now the structure second, third and fourth, which have the double bond in between the carbon and Cl, carbon and this carbon and Cl, whereas the structure of first and fifth are both are same, but only change the what here? Pi bond condition और pi electron condition. देखो यहाँ पर ये pi bond यहाँ पर है बेटा, इससे कहाँ पर है? यहाँ पर ये दिखाई दे रहा. It means only the delocalization of pi electron in the benzene called a resonance. Or we take the example chlorobenzene. So we take the resonance structure of chlorobenzene. इसमें क्या किया बेटा? हमने सिर्फ रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट लिया, वो Cl के लोन पेयर को चेंज करने किया, बॉन्ड पेयर पहले लोन पेयर फर्स्ट को लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में चेंज किया, सेकंड जो बॉन्ड पेयर था बेंजीन का उसको नेगेटिव पार्ट में चेंज किया, तो स्ट्रक्चर हमको ऐसा मिला. फिर नेगेटिव पार्ट चेंज दोबारा करने किया बॉन्ड पेयर में. ठीक है, और ये जो बॉन्ड पेयर है चेंज करने किया उसको लोन पेयर में. सिर्फ ये किया हमने, लोन पेयर को चेंज करने किया बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड को चेंज करने किया हमने नेगेटिव पार्ट में, फिर नेगेटिव पार्ट चेंज करने किया दोबारा हमने बॉन्ड पेयर में. इस तरीके से बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट हियर? पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड इनटू नेगेटिव पार्ट और लोन पेयर चेंज इनटू व्हाट हियर? बॉन्ड पेयर. इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन. So we get first, second, third structure. It is called what here? Resonance structure. It means only delocalization of pi electron or pi bond. Clear? Now, in the bond in between the carbon and Cl or in the halo orange or alkyl halide is very stronger and shorter as compared to halo alkane. It's a very what we can say the long and what here the we can say that in a simple language very weak. यानी जो हेलो ऑरेंज में या अल्किल हैलाइड में जो बॉन्ड है वो क्या होगा बेटा? स्मॉल होगा लेकिन वो टफ होगा. अब टफ क्यों है वो?
उसकी वजह ये है, why the bond in between the Cl and benzene is tough? Reason is that it is less reactive toward the resonance structure. इसीलिए उसका जो बॉन्ड है वो टफ है और शॉर्टर है. What is the length of this C single bond Cl bond in the haloanis? It is the 169. Whereas the bond in between the C single bond Cl in haloalkanes is what here? 1789. 1789. So in this way we take the how the SN reaction will be given by a haloarenes or what here aryl halides. Clear है? Okay. Now the some molecule or some incoming nucleophile attached to this side here in the aromatic ring on the ortho and para position. Why? Because the ortho and para position, if you इसको समझते हैं यहाँ पे, it is called ortho position, it is called as para position, it is called as meta position. So why the incoming nucleophile attached to ortho and para position? Because the ortho and para position of carbon which have the higher number of electron or rich electron. That's why incoming nucleophile is directly attached on the ortho para position, or we get a product is major ortho and para. अब ortho para और minor कौन से मिलते हैं हमको? Meta मिलते हैं. Why? Because due to the steric hindrance we does not get a major product at the meta position, we get a major product on the ortho and para position. Clear है? But in between the ortho and para, the more and more higher number of product are used on the para position, but does not a ortho position. Clear? Okay. So it's all about where reactions of haloarenes with a benzene. First हमने explain किया. बाद में सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन ऑफ द हैलोअरेन्स. इससे कुछ एग्जांपल बाकी है, हम लोग कल के लेक्चर में मिलेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.